Hello everyone. Today in this video we are discuss about an important topic of D block elements, and that topic is oxidation state. Okay. As we know that in D block element, transition element have variable oxidation state, different oxidation states, and also we study that why the transition elements have variable oxidation state, and I tell you some important rules that you have to keep in your mind about oxidation state. So without any delay, let's get start. So firstly, except first and the last member of the transition series, all elements shows variable oxidation state. It means first member और last member को छोड़ के बाकी सारे elements variable oxidation states show करते हैं. And what is the oxidation states? The variable oxidation state means the number of oxidation state, and the reason behind this is, as we know that in D block elements electrons कहाँ पे enter करते हैं? Penultimate subshell में. और in the case of P block element electrons enter in valence shell. Okay, so in D block elements the energy difference between n-1 d and ns orbital is very less. So that's why, as a result of which both orbital will participate in the bond formation. Clear? So that's why the transition element shows variable oxidation states. Now we are talk about 3D series. Okay, so I show you the 3D series elements as well as their configuration and oxidation states also. Okay, firstly, one thing you have to keep in your mind about 3D series, that in 3D series paired electron of d orbitals will not participate in the bond formation. Okay, so firstly let's start from scandium. Scandium, as we know that after removal of 2 electron we get 3d1, but after removal of 3 electron we get argon 18 configuration, noble gas configuration. So it means scandium, that's why shows only one oxidation state. Okay, after that we have titanium, and we get +2, +3 and +4 oxidation state. In vanadium we get +2, +3, +4 and +5 oxidation state. Okay, in chromium we get +2, +3, +4, +5 and +6 oxidation state. Okay, so अभी मैंने आपको बताया था कि एनर्जी डिफरेंस कम होने की वजह से एस और डी दोनों के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, पर हमारे पास यहाँ पे क्या है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट तो शो ही नहीं कर रहा क्रोमियम. बिकॉज क्यों नहीं शो कर रहा? बिकॉज द हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ द Cr इज़ वेरी लेस. हाइड्रेशन एंथैल्पी इज़ वेरी लेस. ओके, सो नाउ इन मैग्नीज we get +2, +3, +4, +5, +6 and +7 oxidation state. +7 oxidation state is the maximum oxidation state of this series. Okay, and one thing I tell you about that, from scandium to manganese we calculate the maximum oxidation state by calculating the number of electrons in n-1 d and ns electrons. Okay, so I show you. In vanadium 3 + 2 5, it means +5 is the maximum oxidation state. In manganese 5 + 2 7, it means +7 is the maximum oxidation state. So +3, +4, +5, +6 and +7, these are the maximum oxidation states. Okay, now in iron after manganese we know that there is now start pairing in the d orbital. Okay, क्या होगा? पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी हमारे पास d ऑर्बिटल की. ओके, सो हमारे पास क्या होगा, जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होगी वो रिड्यूस होनी स्टार्ट हो जाएंगी. ओके, नाउ वी गेट इन आयरन +2, +3, +4, +6. वी डिडंट गेट +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इन आयरन. ओके, नाउ इन कोबाल्ट वी गेट +2, +3, +4. अगेन वी डिडंट गेट +5 oxidation state. So these are the exceptional case. Fe and cobalt we didn't get +5 oxidation state. Okay, now in nickel we get +2, +3, +4 oxidation state. Okay, because we have in d orbital we have 1 2 3 4 5 6 7 8 2 unpaired electrons. So we get +2, +3 and +4 oxidation state. Now in copper we get
+1 as well as +2 oxidation state, but +2 is more stable than +1 oxidation state. In Zn we get +2 oxidation state. Okay, so these are the oxidation state of the 3D series. Now सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि स्कैंडियम जो है वो एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है, हमारे पास वन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है सिर्फ, ठीक है. वाई? बिकॉज आफ्टर रिमूवल ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन वी गेट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, स्टेबल कॉन्फिगरेशन, दैट्स वाई. ओके, एंड आफ्टर स्कैंडियम +2 इज मोर स्टेबल देन +3. वाई? बिकॉज आफ्टर स्कैंडियम वी हैव 3D बिकम मोर स्टेबल. ओके, क्लियर. सो ये थी हमारी 3D सीरीज़ की ऑक्सीडेशन स्टेट. नाउ वी आर टॉक अबाउट 4D सीरीज़. Now 4D series, and I show you the 4D series elements with their configuration and their oxidation state also. So just like scandium, by removal of 3 electrons we get noble gas configuration, then we get +3 oxidation state of yttrium. Okay, now in zirconium we have +3 and +4. After before starting these oxidation state, I want to tell you something, that in 4D series paired electron will also participate in the bond formation. Okay, so you have to keep in your mind that in 4D series paired electron will also participate in the bond formation. Okay, so now in zirconium we have +3 and +4 oxidation state. In niobium we get +2, +3, +4 and +5 oxidation state. In molybdenum we get +2, +3, +4, +5 and +6 oxidation state. Now if we talk about technetium, we get +2, +4, +5, +7 oxidation state. Now why there is a gap of +3 and +6 oxidation state? Because of very stable configuration. Okay, clear. Now in ruthenium we get +2, +7, +3, +4, +5, +6, +7, +8, and +8 is the maximum oxidation state of this series. Okay, now in rhodium we get +2, +3, +4, +6 oxidation state. We didn't get +5 oxidation state and +7 oxidation state. Okay, now in palladium again we get +2, +3 and +4 oxidation state. Again we didn't get +5 and +5 oxidation state and +6 oxidation state. Okay, sorry. Now in silver Ag we get +1, +2 and +3 oxidation state. But in silver +2 and +3 oxidation states are rare, very rare. +2 and +3 oxidation states are shown in AgF2 and Ag2O3. Otherwise we get +1 oxidation state of Ag. Okay, now in cadmium we get +2 oxidation state. Now these are the rare oxidation state. Okay, and similar in zirconium +3 oxidation state is rare, +4 is more stable because of stable configuration. Because after removal of 4 electrons in zirconium, after removal of 4 electrons we get stable configuration, so +4 is more stable than +3. And in niobium +5 is more stable, +2, +3, +4 are rare. But in the case of molybdenum we get all the oxidation state, +2, +3, +4, +5, +6, because these both orbital are singly paired, so molybdenum shows all the oxidation states. Okay, similar in technetium +2 and +7 is more stable. Now +4 and +5 is rare because after removal of 2 electrons we have half filled configuration, so +2 is more stable, and after removal of 7 electrons we get stable configuration. Okay, clear. Now in ruthenium the +5, +6, +7, +8 oxidation states are rare,
Okay, and in rhodium +6 oxidation state is rare, and in palladium +3 oxidation state is rare. So these are the oxidation state of 4D series. 4D series की जो oxidation state है little bit difficult as comparative to 3D series. Okay, now अगर हम बात करते हैं higher oxidation state की, so we get higher oxidation state of transition elements either with the fluorine or oxygen. हमें हायर हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, जो ये वाली हमारे पास हर किसी के साथ नहीं मिल सकती. ये हमारे पास मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ ही मिल सकती हैं. ओके, सो वी गेट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट आइदर विद फ्लोरीन और ऑक्सीजन. ओके, सो दिस इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 4D series. Now we are talk about 5D series. Now in 5D series we have मतलब हमारे पास क्या होगा इन 5D सीरीज, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो भी पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर. ओके, now I show you the elements of the 5D series with their configuration as well as oxidation states also. Okay, so in lanthanum after removal of 3 electrons we get +3 oxidation state. Okay, in hafnium we get +3 and +4 oxidation state. Okay, in tantalum we get +2 +3 +4 and +5 oxidation state. Okay, in tungsten we get +2 +3 +4 +5 +6 oxidation state. In rhenium we get +2 +3 +4 +5 +6 and +7 oxidation state. Okay, but in the case of osmium we get +2 +3 +4 +6 and +8 oxidation state. We didn't get +5 and +7 oxidation state. Okay, so now when we talk about iridium, now in the case of iridium we get +2 +3 +4 and +6. Again we didn't get +5 and +7 oxidation state in iridium also. Okay, now in platinum we get only 2 oxidation state, +1 and +3, because क्या होता है प्लेटिनम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड ही मिलने बहुत मुश्किल होते हैं हमारे पास, तो इसीलिए हमारे पास इसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हमें नहीं मिलेंगी. ओके, इन गोल्ड, now in gold we get +1 and +3 oxidation state, but +3 oxidation state is very rare, +1 oxidation state is stable. Okay, in mercury we get +2 as well as +1 oxidation state, because +1 हमें पता है, as we know that mercury is only element that liquid at room temperature, so that's why it shows +2 as well as +1 oxidation state. So this is the oxidation state of the 5D series. Okay, and this is also easy as comparative to 4D series. So now I tell you some important points you have to keep in your mind about oxidation state. So first is, in first series +2 general oxidation state except scandium +3. इट मीन्स हमारे पास कॉमन जो होती है वो +2 होती है आफ्टर स्कैंडियम, बिकॉज आफ्टर स्कैंडियम क्या होता है हमारे पास 3D बिकम मोर स्टेबल. सो +2 इज जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सेप्ट स्कैंडियम, बिकॉज स्कैंडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास कितनी होती है +3. अप टू मैग्नीज हमारे पास क्या होती है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1 d एंड ns ऑर्बिटल. क्लियर कि हमारे पास इट मीन्स दैट कि मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो हमें कहाँ पे मिलती है, नियर मतलब इसका सॉरी इट मीन्स मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब मैक्सिमम
ऑक्सीडेशन स्टेट को हम काउंट कर सकते हैं कैसे, जो N-1 डी और NS में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ऐड करके हम मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था 5+2 कितना हुआ था, +7 हमारे पास मैग्नीज की कितनी थी, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। सेकेंड पॉइंट इज maximum number of oxidation state in the near or the middle of the series. It means that जो हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जैसे हाईएस्ट जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो हमारे पास या तो मिडल में होगी और या नियर द मिडल होगी। सो अगर हम बात करते हैं मैग्नीज की तो हमारे पास कहाँ पे था, नियर अबाउट मिडल था। ओके, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट इन द नियर और द मिडल ऑफ द सीरीज। ओके, and minimum number of the oxidation state in the corner of the series. Clear? Now third point is, if we in d block elements, if we take vanadium, we get +2, +3, +4 and +5 oxidation state. We know that. Now in अगर हम बात करते हैं सक्सेसिव ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो हमें क्या पता चलता है, the difference between successive oxidation state is +1 in vanadium. The difference between successive oxidation state is vanadium. But in the case of p block element, if we take lead shows we get +2 and +4, and there is difference of successive oxidation state difference of, इसके बीच में कितना डिफरेंस है, +2 का, इसमें कितना है, +1 +2. So this is the difference between d block and p block elements. Okay, on the basis of successive oxidation state we can say. Now fourth point is, higher oxidation state of heavy metals are more stable. हमारे पास जो heavy metals की higher oxidation state है वो ज़्यादा stable होती हैं. Now we take example in d block elements. We take chromium, molybdenum and tungsten. There we have +6 oxidation state, +6 oxidation state of molybdenum, and tungsten also shows +6 oxidation state. But tungsten is more stable than these. Okay, it means higher oxidation state are more of heavy metals are more stable. But in the case of p block elements, अगर हम बात करते हैं p block elements में, हम लेते हैं फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ. सो these shows +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, बट दी बिस्मथ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट पे स्टेबल नहीं होता ड्यू टू इनर्ट पेयर ऑफ इफेक्ट. ओके, ड्यू टू इनर्ट पेयर ऑफ इफेक्ट. अब हम क्या बताएंगे, हमारे पास क्या होगा, हायर oxidation state of heavy metals are more stable in d block elements. Higher oxidation state of heavy metals are less stable in p block elements. Okay, now we have fifth point is, stability of oxidation state depends on the nature of the solvent. इसमें क्या है, स्टेबिलिटी जो होती है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, वो नेचर पे भी डिपेंड करती है, किसके, सॉल्वेंट के नेचर पे. सो इफ़ वी कैन टॉक अबाउट कॉपर, एज वी नो दैट कॉपर शोज +1 and +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. इट मीन्स Cu पॉजिटिव and Cu2 पॉजिटिव. ओके, बट इन वाटर Cu2 पॉजिटिव इज अनस्टेबल बिकॉज वट इज़ द रीज़न, मैंने आपको रीज़न बताया था. आई टॉक अबाउट द रीज़न ऑफ Cr. द रीज़न इज the hydration enthalpy is less, so that's why Cu positive is unstable. Okay, so अगर in water हमारे पास जो Cu positive होगा वो हमारे पास disproportion reaction show करता है. What is the disproportion reaction? When in which reaction the reactant undergoes reduction as well as oxidation also. Okay, so Cu positive ऑक्सीडाइज होके हमारे पास Cu2 पॉजिटिव बना रहा है और रिडक्शन करके हमारे पास कॉपर बना रहा है. तो Cu2 पॉजिटिव इज़ मोर स्टेबल देन Cu पॉजिटिव. सो इसको बताने यही मीनिंग था कि हमारे पास जो नेचर ऑफ सॉल्वेंट है वो भी डिपेंड कर, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करती है कि वो कैसा होना चाहिए. सो
That's about all. That's all about today. So thank you so much, guys.